Am I not audible? What happened? Yes, Maria, are you done writing this? No, sir. I took a screenshot Okay. yesterday, but I couldn't write it down. Okay, please write it down. Hello. For N2, what about N2? Yes, sir, I wrote that. N2, yeah. Huh? Okay. Please write this down. I mean, if you at least write this part. Okay. The sigma star 2 present. I mean, you start from here, sigma 1 is sigma 1 star, sigma 2 is sigma 2 star, sigma 2 p z, to p y and pi to p x, pi star to p y and pi star to p x, and then sigma star to p z. You can at least write this part, and then you can write the negatives here, like O2 negative, we have to see O2, 2 negative, 1 negative, O2 positive, and O2 2 positive, you have to see. And the magnetic behavior, number of bonding, anti-bonding, bond order, bond length, bond strength, bond dissociation, and the existence. ठीक है, डोंट राइट द इनसाइड पार्ट, उसको हम लोग देख लेंगे. एटलीस्ट राइट दिस मच है ना, बाकी छोड़ दीजिए, आप मत ही लिखिए. You don't write anything else. Just write this part, the molecular orbital diagram. Please raise your hand once you're done writing. Please raise your hand once you're done writing the molecular orbital diagram, molecular orbital configuration. Maria Tarif is done. Waiting for Matiha Shahid. Pardon, please write this part, the molecular orbital diagram for O2. Uh, Now, this is the molecular orbital diagram that we will first of all learn about O2. Then we will learn about O2 1 negative, O2 2 negative, O2 positive, O2 2 positive.
So in O2, we know that there are total number of electrons are 16, and that is why we have used 1, 2, 2, 1 type of configuration. Huh? Now 16 electrons we have to put, so we'll start from 1s, sigma 1s, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. So as you can see, oxygen molecule, the O2 molecule, it is having two unpaired electrons, and that is why it is what it is paramagnetic, as you can see. It is paramagnetic. Huh? Now, if you count the number of bonding electrons, then bonding electrons will be 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 bonding electrons. Anti-bonding electrons will be 2, 4, and 5, 6, 6. Now, difference between 10 and 6 is 4. Divided by 2 will give you the bond order that is equal to 2. ठीक है? And now, let us see. एक काम करते हैं यहाँ पे. Let me erase this part, है ना? Otherwise, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. Which one should we do? Tell me, guys. कौन सा करें? O2 1 negative या O2 positive? Positive और negative? Cation और anion? जल्दी बताए कोई भी. माइक ऑन करके. Cation और anion? Cation और anion? ओहो. Cation और anion? जल्दी. क्या था है? Cation. Positive, है ना? Positive. Very nice. With positive attitude. ठीक है, चलिए. So in cation, what we are doing? What do we do? Tell me, guys. We remove electron or we add electron in cation? What do we do in cation? We remove electron or we add electron? Remove electron. अरे रे. Remove electron. सिर्फ मारिया ही, बाकी सब सो गए क्या? I will remove one electron, and I will see it is still what it is still paramagnetic. And I have removed the electron from the anti-bonding. Then what is going to happen if I remove from the anti-bonding electrons? The bonding will be still 10. The anti-bonding will become 16, right? 10. The anti-bonding will become 5. Now 10 minus 5 will be equal to 5 divided by 2. It will be equal to 2.5. Now moving on to O2 positive. O2 2 positive. So I'm removing 2 electrons from the O2 molecule. है ना? अगर O2 रहता तो ये इस तरह रहता. I'm removing 2 electrons from here. 1, 2. Now, if you see here, it is now diamagnetic. Why? Because there is no unpaired electron. The number of bonding will still be 10 because we have not touched the bonding electrons. The number of anti-bonding, it will become how much? It will become 1 more less, that is equal to 4, and the bond order will become 3. Now, if I go back to O2 like this, then I will add 1 electron to get O2 negative. So I'm adding 1 electron and I'm putting this in green color. This is new electron that I have added. Now, as you can see, it is still paramagnetic. I have not disturbed the paramagnetism. We are still having an unpaired electron. And in this case also, we have not touched the bonding or vitals. That is why the number of bonding will be still 10. The number of anti-bonding, we have increased 1 electron, and this will be equal to how much? 7. Now, if I look at the bond order, 10 minus 7 will be equal to 3 divided by 2 will be equal to 1.5. If I add 1 more electron into O2, it will become O2 2 negative. Now the paramagnetic behavior will not be shown because all the electrons are paired, so it will be diamagnetic. Number of bonding will still be 10, number of anti-bonding will become 8, and the bond order will become 2. So from the bond order, you can see that O2 positive will be the most stable. Then O2 2 positive will be most stable, O2 positive will be less, then O2, then O2 negative, and O2 2 negative. And the same way, the bond order is going to differ. So this is the bond length. The bond length सबसे ज़्यादा किसका होगा? The one which is having the least bond order. Then the bond strength will be highest for the one which is having the highest bond order. Bond association energy will be also highest for the one that is having the highest bond order. And all of these are going to exist because there is at least one bond between them. है ना? यहाँ पे एक चीज तो हमने गलती कर दी. 2 नहीं होगा यहाँ पे, 1 होगा because 10 minus 8 is equal to 2 divided by 2 will be equal to 1. चलिए, please copy this down. और इसके बाद बस एक आप छोटा सा नोट लिख लीजिएगा that NO and CO have order order N2. NO हो चाहे CO हो, both are having what? Same amount of N2. ठीक है, तो N2 में क्या होता है? N2 में first of all you have pi, then you have sigma, then you have pi, then you have again sigma. ठीक है? It is 2 1 2 1. Here it is 1 2, and in N2 it is 2 1 2 1.
Please raise your hand once you're done writing the whole thing. Please, three people have raised hands. I'm waiting for Fadil, Madiha, and Tarif. Iyad, what happened? You're late today? Yes, Iyad. What happened, Iyad? Maybe you're typing. चलो ठीक है आपने लिख लिया waiting for Fadil and Madiha. तुम दोनों ने जवाब क्यों नहीं याद करनी प्लीज टर्न योर माइक ऑन ये दिमाग खराब हो जाता है ऐसे याद टर्न योर माइक ऑन Yes, sir. क्या हुआ कैसे लेट हो गए सो गए थे क्या हुआ था बताइए तो Nothing, sir. I was just spoke that. फादिल आर यू डन फादिल फादिल स्टिल राइटिंग फादिल कैन यू प्लीज और नो फादिल आर अच्छा डन ठीक है थैंक यू चलिए नाउ दिस क्वेश्चन इट इज बेसिकली अभी बार ट्राई कीजिए Then explain. The linear combination of atomic orbital, that is LCAO, to form molecular orbital takes place only when the combining atomic orbitals. थोड़ा याद आ जाएगा ना ऑप्शंस पढ़िए ठीक है आई एम गिविंग यू गाइस 2 minutes फॉर दिस 2 मिनट में अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया नहीं तो फिर आई विल डू इट फॉर यू गाइस ऑप्शंस रीड कीजिए एबीसीडी और फिर उसके बाद जो आपके पास एबीसीडी चॉइस है उसको रीड कीजिए Yeah, I've got one answer. Okay, Maria. Yes, that's correct, Maria. Very good. थोड़ा ऐसे लॉजिकली भी आंसर करेंगे ना मतलब सोचेंगे तो आ जाएगा आंसर ठीक है 30 seconds more the time is done so okay yeah see the first option and it is very I mean, kind of VBT type of thing also the molecular orbitals they will have same energy then it will overlap okay for example if you have one s no you have
and the atomic orbital 1s, the atomic orbital 1s, both of these are having same energy or similar energy, then they will form two molecular orbitals and they will be known as, this will be sigma 1s and this will be, the one with higher energy will be sigma star 1s. Huh? So they should have similar energy. Obviously, now when we are talking about molecular orbitals, we are forming bonds. And in bonds, guys, tell me which type of bond will be better. If you have something like this, oops, let's suppose we have this type of overlap, that is maximum overlapping, as you can see. Or if you have something like this, so I hope you can see that. Which one is better, A or B? Tell me, guys. जहां पे ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है वो अच्छा है या जहां पे कम ओवरलैपिंग हो रहा है वो अच्छा है? बोलो, जल्दी बोलो, आसान सवाल है, लॉजिकल है। से ज्यादा ओवरलैप है। ज्यादा ओवरलैपिंग है ना, बिकॉज जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा. So if they are saying it should have minimum overlap, that means it is what? It is wrong. It's not right. Maximum overlap होगा तब जाके बॉन्ड हमारे पास अच्छा बनेगा, because we are trying to make molecules and molecules they will have bond. Have same symmetry about the molecular axis. That means both of them they should look same. वही मतलब जैसे 1s होगा, this is circular और this is spherical, this is also spherical. उसी तरह से जब आपके पास sigma 2pz होता है, it is like this, and this 2pz is also like this, like this, and then pi are like this. So as you can see, all of these are what? Similar looking. So they should have what? They should have similar or rather same symmetry about the molecular axis. If the C option is correct, the D option will never be correct because both of these are opposite statement. So the correct option is going to be A and C only. Okay. Moving on. I will give you few seconds ना, तो आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए. Don't cannot give you time to write because coordination भी करना है सर. चलिए now just one. In which of the following processes the bond order increases and paramagnetic character changes to diamagnetic one? You have the notes, है ना? Notes से ही कम से कम आप बता दीजिए. Bond order should increase and paramagnetic character it should change to diamagnetic. चलिए, I'm giving you 1 minute है ना, because notes में direct answer है इसका. ठीक है, like if it is option A, B और D तो डायरेक्ट मिल जाएगा. But if it is neither A, neither B, neither D, because A, B and D are there in your notes, मतलब पूरे खोल खोल के बिल्कुल है. So अगर A भी नहीं है, B भी नहीं है, D भी नहीं है तो C होगा. Try this, try this. Okay, Maria and Iyad have answered. 30 seconds more. ठीक है. Now please see. In the first one, what is happening? We are having O2. O2 is what? Paramagnetic? Yes, O2 is paramagnetic. Then it is converting to paramagnetic. ठीक है. O2 is paramagnetic and the bond order is what? 2. Now, if I am going to O2 negative, it is getting diamagnetic, but the bond order is becoming 1. है ना? Because you are adding electrons in the anti-bonding orbital. And when you add electrons in anti-bonding orbital, happen, the bond order will decrease. So it will not be the option. ठीक है. Now, second one is what? N2 to N2 positive. N2 is already diamagnetic. So it is saying that
paramagnetic character changes to diamagnetic. So N2 should, the first initial state should be what, paramagnetic. So this option cannot be true. NO, I don't know NO, sir. NO तो आपने पढ़ाया ही नहीं. ठीक है, चलो छोड़ दे NO. O2 से O2 positive. O2 is what? O2 is paramagnetic. It is oxidation state is 2. And when it is getting converted to O2 positive, we are removing only one electron. It is still paramagnetic. That means this option is also not correct. So the only option remaining is what? C. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. ऑल्दो NO के बारे में हमने ये लिखा दिया, NO has similar as that of N2. So you will have the arrangement as that of N2, and then you will fill how many electrons? In NO you have nitrogen has 7 electrons, oxygen has 8 electrons. It will be 15 electrons that you have to fill. ठीक है, so it will be one more than N2, and N2 is diamagnetic. If you add one electron, it will become paramagnetic. ठीक है, then if you remove that electron from the anti-bonding, it will not increase the bond order. चलिए, अब यहाँ पे आपको लग रहा है सर ये फिर क्या आ गया यहाँ पे? What is this acetylide ion? Acetylide ion is C2 2 negative. ठीक है, तो C2 2 negative. Giving space 2 minutes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कितना है इसमें? यू हैव कार्बन के लिए 12. 12 मींस 14 एंड लेस देन 14 वाला है ना? तो n and plus 2 you are having. This will be similar to that of N2. इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो I will tell you two methods, है ना, to do this. You have like 1 more minute remaining. Yes, Maria, very good, correct. चलिए, इस तारीख करेक्ट. देखिए, सबसे पहले तो ना, सिंस कार्बन C2 2 negative, it is what having, it is similar to that of N2 and it will be having about 14 electrons. सबसे पहले तो I will choose the one which is having 14 electrons, है ना? And by the way, N2 के में आपके पास कितने 14 electrons हैं? Then and also you know should know that this is what diamagnetic. ठीक है, ये क्या है? डायमैग्नेटिक. अब देखिए, जैसे O2 पॉजिटिव आया आपके पास, ठीक है, O2 पॉजिटिव, सो O2 हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 16 electrons, and then you have to minus 1, that is equal to 15 electrons. Now 15 electrons, it can never be diamagnetic. Odd number है, and you will have at least one electron what is. तो O2 तो कभी यहाँ पे हो ही नहीं सकता, because they are saying that bond order and magnetic property should be same. So 15 can never be what? It can never be diamagnetic. Similarly, O2 negative में क्या होगा? You will have 16. Then you will have plus 1, that is equal to 17. This also can never be diamagnetic. Can never,
number is NO positive. Nitrogen is how much? It will be 7 plus 8 minus 1, 14. And this can be diamantic. I mean, there is no other option left also. No? So D option up. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. So one way is that you completely make the orbital diagram for all of these, and you have to remember. But other thing is that like the approach to the question changes with the options. ठीक है. यहीं पे अगर O2 negative की जगह O2 2 negative होता, then I would have to make O2 2 negative and I have to write the bond order for O2 2 negative. कि O2 2 negative का bond order कितना? If it was here O2 2 positive, then I would have to write the bond order for O2 2 positive also. ठीक है. So all of these things are needed, but the approach, it will change according to the options that are given to you, the choice that is given to you. Okay. Chalo. According to the MO theory bond orders. You will have to like do for all of them. Take 2 more minutes. Okay. There are 2 more questions. ठीक है. Okay, yeah. Okay, Maria. Just 15 seconds more. No, Shahid, try once again. So for O2 negative, you should know that it is what? What? For CO, you have to look at the number of electrons. If you look at the number of electrons for CO, it is equal to how much? It is equal to 14, right? 8 plus 6. And for NO positive also, it is equal to 14. Now, अब यहाँ से ना थोड़ा सा आप लोगों को जनरलाइजेशन स्टार्ट करना पड़ेगा. See, whether it is more than 14 or it is 14 and less than 14, till 8 electrons, it is everything is same. Can you see that? Like the 8 initial electrons are filled in both the case of the case 1 and case 2, both of them are having the initial 8 as same. Now the changes start when you have to fill the rest of them. But if you look at the next 6 electrons, after 8, you have next 6 electrons. Now, so these 6 electrons, if you look at them completely, they are filled in what they are filled in the bonding orbitals in the case 2 as well as in the case 1. Okay. So till
8 तो आपके पास मतलब whatever is in the number of electrons in bonding and number of electrons in anti-bonding, it is the same. ठीक है. Now after 8 you have 6 electrons. These all of these 6, whether it is 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5, 6, 6 electrons, all of these 6 electrons will be filled only in the bonding. And if there are 6 electrons in bonding, बाकी 8 को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज 8 में जो एंटी बॉन्डिंग में उतनी बॉन्डिंग में वो कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का उससे कुछ लेना ही देना नहीं. ठीक है. So we are in the we are here, no? ठीक है. So we have 8 which we don't have to consider. Then we have the 6 that we have to consider, and in this 6 we will get what 3 bonds because all of them are in the bonding orbitals. ठीक है. So whether it is CO, whether it is NO positive, it is going to be what? It is going to be 3 bonds. So 133 is the correct option. Now this is a quite generalization, but here still you can see that. If, for example, if you have 14 electrons, then the number of the bond order is equal to 3. If you, that is, if you add one electron, it will be 15. So whenever you are adding, you are going to add in the anti-bonding orbital, and that is why the bond order will become less, that is 2.5. If you add one more, it will become 2. If you add one more, it will become 1.5. If you add one more, it will become 1. You can decrease in the same order. ठीक है. 14 से आप क्या कर सकते हैं? You can decrease also. For example, if you have 14, now below 14 you will have 13. 13 will have 2.5. And you go below that, you will get 12. 12 will be having 2. You go below that, you will have 1. When 11 will be 1.5. Then you have 10. 10 will be having 1. Okay. So this is the number of electron. This is the bond order. Please write this thing down. With increase and decrease of one electron from the either sign, the bond order changes by half. I hope you are done writing. What is the idea of Li2O, Na2O2 and KO2? ठीक है. So here what does it mean? यहाँ पे आपके पास Li2, in this case oxygen is in O2 because lithium is not lithium is group 1 element, है ना? Linear customer. So it will be having +1 charge and O2 will be having. So in case of Li2O, O2 negative, O2 2 negative. O, sorry, it is O which is having 2 negative, and in Na2O2, in this case you can see that sodium, there are 2 sodium atoms, it will be +1 +1, and that's why O2 will be having 2 negative charge. O2 will be having 2 negative charge. Then you have KO2. In this case, K will be having positive charge, so O2 will be having 1 negative charge. Okay. So O2 2 negative. O2 2 negative is what? O2 is having 8 electrons. O2 2 negative will be having 10 electrons. We'll have 1s2, 2s2, 2p6. As you can see, these are 10 electrons, and it is what? It is diamagnetic. Make sense? Yes or no? Please tell me. This is for O2 negative. O2 negative for the first case. Okay, it is diamagnetic. And negative is not diamagnetic. So dia, para, para. This is D option. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Where is
आंसर करने की सोचिए, विल गेट द आंसर. Any answers? No answers? चलिए, let's see. Waste my time. The pi bonding molecule orbital has no electron density above below the internuclear axis. The pi star anti-bonding molecular orbital has node between the nuclei. ठीक है, तो देखते हैं. How do we make pi? Pi is made by the overlapping of orbitals in this order. ठीक है, इस तरह से overlap करें. Once they overlap, they have electron density here and electron density here. This is internuclear axis. Internuclear axis means when you are sitting with the nucleus of an atom with the nucleus of the other atom. If you join these two atoms, this is the internuclear axis. Okay. If you join these two nuclei, so you can see that electron density is above and electron density is below. As lower electron density above below, this is wrong state. This is false. Because the pi molecular orbital, bonding molecular orbital, is having electron density where? It is having the electron density itself above and the below the internuclear axis. The pi star anti-bonding molecular orbital has node between the nuclei. Node means where you have minimum electron density, or rather zero you can say, but we say minimum because it is probabilistic. Okay, so it will be having minimum. So that is true because that's the definition of a node. That in node you will not have any electron density, and that's what is there actually. So if you look at the pi antibonding, its shape is like this, and you can see there is no electron density here. So this is true. So statement one is false, but statement two is true. So this will be the correct option. So this is done. Now we move on to the coordination compound. No. तो आई होप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान होगा आपको, है ना, एटलीस्ट बेसिक्स तो याद होगा आपको, एंड देन वी कैन स्लोली मूव ऑन टू सीएफटी एंड वीबीटी वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम. ठीक है. वन सरप्राइजिंग थिंग इज दैट दे हैव नॉट आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम आइसोमेरिज्म. ठीक है. दे हैव आस्क्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वीबीटी एंड सीएफटी एंड विल बी लुकिंग एट दोस पोर्शंस एसेंशियली. आइसोमेरिज्म के लिए आप क्या कीजिएगा, वट एवर यू हैव डन इन बोर्ड्स, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बस. ठीक है. Because majority of the question they are asking from VBT and CFT, तो उसी को डील करना ज्यादा अच्छा है. Otherwise, isomerism of coordination compound on its own, it is a very huge topic. ठीक है. It cannot be covered really because you have to take each and every cases. Fine. So basic is that in a coordination compound, we have two entities. One is known as the counter ion, and the other one is sphere coordination entity, coordination complex. In coordination sphere or coordination entity, we have two things. We have the central metal atom and have the ligand. ठीक है. चलिए. The first question that we are having, which of the following complex is homoleptic? I hope you guys remember homoleptic. If not, then I will give you guys 1 minute for this question. Those who can answer, they would be knowing what is homoleptic. And if you don't know what is homoleptic, then I will explain it to you. Yes, Maria, correct? होमोलिप्टिक भाई हम पढ़ाए, तुम लोग पढ़े ही नहीं क्या? बिल्कुल थोड़ा रिवाइज करके आया करो भाई. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गाइस, वन मोर थिंग, इफ यू आर डूइंग फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कुछ हम लोग की क्लास से कोई चैप्टर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट रीड द नोट्स एंड कम. ठीक है. ऐसे ब्लैंक मत आइए, थोड़ा सा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप लोग को आ रहा हो. ठीक है. तो आई हैव गॉट टू आंसर्स, मारिया एंड शाहिद. भाई लोग कर सकते हैं. तो आप लोगों ने केमिस्ट्री का एग्जाम देके बिल्कुल ऐसे सन्नाटा छा गया क्या आप लोग का? बिल्कुल छोड़ ही दिया आप लोगों ने, सब भूल गए.
ओके, चलो ठीक है। होमोलिप्टिक मींस a complex which is having only one type of ligand. All the ligands are the same. अब आंसर कीजिए। Homoleptic complexes are such complexes which have only one type of ligand. इसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं उसमें। चलिए आंसर करें भाई, तो फिर हम ऑप्शन ही बता दें क्या आप लोग को? फादिल, सबका आंसर आना चाहिए अब तो। ठीक है, फादिल, मतीहा, तारीफ एंड इयाद, प्लीज आंसर गाइस, क्विकली आंसर। होमोलेप्टिक लिगेंड्स आर दोस, हाँ चैट में आंसर कीजिए, चैट में। Homoleptic complexes are those which have only one type of ligand. अरे भाई इतना देर लग रहा है। फादिल अपनी एक क्लास में? फादिल, ठीक है, याद, वेरी गुड। मदीहा है तो फिर आंसर कीजिए ना। यस मदीहा। फादिल आंसर कीजिए, कौन सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का? हाँ, फिर टाइम क्यों लग रहा है? तारीफ का आंसर आया? तारीफ, तारीफ का आंसर नहीं आया है। तारीफ, यू हैव नॉट आंसर्ड, व्हाई? टाइम लगेगा। D option will be correct, है ना? Because in this complex we are having only one type of ligand. Others में we have two types of ligand. चलिए moving on. थोड़ा सा difficult है, I understand that, but फिर भी try this. Looking at the options, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा ना? बिना पढ़े कुछ तो सवाल आएंगे ना उसके लिए। ओके याद। नहीं नहीं, हम तो क्या बोले? हम तो कुछ नहीं बोले यार, ऐसा गलत से कहाँ बोले हम कुछ? ऐसे जैसे ओके। Moving on. So one thing that you should know, at least that you should know, is ethane 1,2-diamine is a chelating ligand, is because it is bidentate ligand. And if you have anything that is bi-tri, that is going to be chelating. That means formation of ring will take place. So this is true. We have option number B, A, B, and option number D, that is A, B. ठीक है, तो E को चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? ई को चेक कर लीजिए या डी को चेक कर लीजिए, बी को, सी को, किसी एक को भी चेक कर लीजिए ना। अब इसमें से आपको कोई एक के बारे में पता हो जाए तो फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, किसी एक के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। तो वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो एल्यूमिनियम बनेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट दैट वी डोंट नो। साइनाडाइन इज यूज्ड एज लिगेंड फॉर, आई मीन ऑल ऑफ दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज द ई क्वेश्चन, ई पार्ट।
E statement saying that stability constant of Ca2 positive and Mg2 positive are similar with EDTA complex. If you have these metal different, जब metal ही आपके पास Ca2 positive and Mg2 positive are different, वहां पे stability same कैसे हो जाए? ठीक है? So the E statement is what? It is false. And if it is false, that means the B option will not be correct. The correct option is going to be D. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. देखिए if you can answer any one of these. ये आपको आंसर कर देना चाहिए. ये आपको आंसर कर देना चाहिए. हम्म, तुम्हारे यहाँ आंसर. चलिए, एक 2 मिनट थोड़ा सोच के दीजिएगा, आंसर तो आ जाएगा. Okay, yeah, that's also answered. Okay, Shahid has answered. Okay, काफी लोगों ने आंसर किया है. चलिए, सो एक चीज तो आपको इसमें बताइएगा, कौन सा पता था आप लोग को? ऑप्शन ए बी सी डी में से एक पता था आप लोग को, कौन सा पता था? मेंशन करके Vacancy बताइए. list. यस, याद क्या बोला आपने? Vacancy catalyst. अच्छा, मिल्टन से कैटलिस्ट पता था. ठीक है. And blood. और फादिल को विटामिन डी. अच्छा, फादिल को B12 भी पता था. ओके. शाहिद को, अच्छा, मारिया को B12 पता था, ब्लड पता था, है ना? ठीक है, चलिए, ठीक है. दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर, है ना? फाइन. लाइक यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन. जब तक आप इस तरह के सवाल नहीं देखेंगे ना, तब तक मतलब तैयारी कंप्लीट नहीं होगी. ठीक है, तो एक चीज तो हमको लगा था आप लोग, ठीक है, ब्लड पिगमेंट वुड बी द, आई थिंक आई वाज थिंकिंग ब्लड पिगमेंट आप लोग को पता होना चाहिए दैट उसमें आयरन होता है ना? जब आई होप ऐसे पता चल जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो हेमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन की दवाई देते हैं. आई होप कि थोड़ा सा आप लोग को अगर नहीं पता तब तो अच्छी बात है कि मतलब घर में इसी तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके जानने वालों में.
अगर नहीं पता तो, ठीक है। लेकिन अगर जानने वाले में किसी को होता है इस तरह का, तो आप लोग को पता हो जाता है कि ठीक है, इसमें आयरन की दवाई देते हैं, ठीक है। तो ब्लड पिगमेंट इट हैज आयरन एंड दैट इज व्हाई इट हैज दोस, बिकॉज ऑफ दैट हीम कॉम्प्लेक्स इट गेट्स अ रेड टाइप ऑफ कलर आल्सो, ठीक है। तो बी का 3 होगा, ठीक है। तो B3 इज इन द ए, एंड आपके पास डी ऑप्शन में देर आर ओनली 2 ऑप्शंस, ठीक है। नाउ विटामिन B12 में आपके पास, अब जिन लोगों को विटामिन B12 का पता है, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट, है ना। तो इन दैट केस अगर आपको 2 पता है, फिर देन यू कैन आंसर इट नाउ, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट अगर किसी को पता था, विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, देयर इज प्रोटीन, फाइन। सो एंड जिगलर कैटलिस्ट में आपके पास टाइटेनियम होता है। नाउ ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दैट केस, बिकॉज विटामिन B12 का कोबाल्ट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Moving on, we have one question from my, sorry, इस पे कोई मैसेज पे आ गया। Try this. The total number of stereoisomers of for the complex CrOx whole twice ClBr3 negative, where OX is oxalate ion. I'll give you one more minute. Yep. Okay. तो we have CrOx and Cl and Br full thrice. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो one way you can make this is Cr. Here above we will have Cl, here you will have Br, and I hope you know, remember that oxalate is what? It is a bidentate ligand. तो oxalate को हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, oxalate like this, and then oxalate will be like this, ठीक है। Now if I look at the plane of symmetry here, अगर हम इसको इस तरह से यहाँ से बीच से ऐसे काट दें, then and that side also I have oxalate, in this side also we have oxalate, so it is going to be completely symmetrical. It will not have any stereoisomers. यहाँ पे इसके stereoisomers कोई नहीं होगा, but I can arrange this in one more way, which is like this. Cr, chlorine and Br is here like this, chlorine and Br is here like this, and I have the oxalate ion which is like this. OX and OX. Okay, it is like this. Now this is not symmetrical, because if I have a plane of symmetry like this, and that side I'm getting chlorine, this side I'm getting bromine. So it is obviously not symmetrical, and this will have one D form as well as the L form. इसके enantiomers हो गए. So एक D वाला हो गया, एक L वाला, D और L वाला हो गया, and then you have this one isomer. ठीक है. So all of these are going to give you how many? The total number of isomers, it is going to be what is going to be? Total number of stereoisomers will be. इसको press down.
Let's see here, guys. Next is spectrochemical series, and spectrochemical series is because we have to do questions on CFT and DPT. Okay. So the spectrochemical series, it is a list of ligands which is arranged in their order of crystal field splitting. The how much splitting they cause when they are when they are present as a ligand. So how to remember this? I'm right. Maria, you understand Hindi, no? I think पहले पूछा है आपसे. Maria, you understand Hindi, right? Yes, sir. So many of you may have remembered this, because of the board examination. Let's see if revise कर लीजिए. So I negative, Br negative, Sc negative, Cl negative, S2 negative, F negative, OH negative, oxide 2 negative, H2O. Then you have NCS, EDTA, NS3, ethylene diamine. Then you have NO2 negative, Cn negative, and Ca. How to remember this? So I एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार. This one line you can remember. एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार. Till here. Then the next line you can remember. नाचते होता EDTA, ammonia NS3 in EN, North NO2 negative, Canada CN negative, Colombo नहीं मिला CO. Colombo is for CO. In general, like for example, अगर आपके पास ligand आ गया ना, जैसे कि नाइट्रोजन के ही सारे ligands हैं, then you will have to use this particular spectrochemical series. But one of the ligand is from nitrogen, one of them is from carbon, one of them is oxygen, one of them is from halogen. कुछ आ गया, फिर आपके पास OH negative, OX2 negative, H2 oxygen donors है ना, इसमें से कुछ आ गया. Then in that case, you should remember only the CNOx. The carbon donors are what are the strongest, then followed by nitrogen donors, then followed by oxygen donors, and then the halogen donors. Okay. Now, the crystal field splitting energy, it actually does not only depend on the spectrochemical series. Spectrochemical series पे तो depend करता ही है that if you have carbonyl is going to show a higher magnitude of splitting rather than NO2 negative or F negative. But it is basically, it depends on what the interaction between the metal and ligand. If the metal and ligand, they have a good interaction, they have very good interaction, that means the CFSE will be higher. How they can have good interaction? Metal, it has positive charge, and the ligand, it has negative charge. That means positive charge hota hai in the sense of the atom, that is the central metal atom, it has some oxidation state, that's why it is positively charged. A ligand, it cannot also have negative charge, but it comes with electron, and because it is coming with electrons, we assume that it is going to have a negative charge. Okay? When I say positive and negative, I'm talking that stuff. Now, if the positive charge is very high, at that time also what will happen? At that time also the CFSE will be very high because positive charge is there and negative charge is coming. So if positive is high, the force of attraction between positive and negative will be what? Will be very good. So CFSE, it will depend on what the oxidation state. Basically, it depends on interaction between metal and ligand. The interaction between metal and ligand, it depends on oxidation of the central metal atom is very high. That means the CFSE is very high. If the metal atom is having large number of protons, that means if I talk about 3D series, then 4D series, and then 5D series, then we know that in 3D, 4D, 5D, atomic number is going to increase. As the atomic number increases, the protons also increase. If the proton is increasing, the positive charge will be increasing in the nucleus, and they will be attracting the ligands very effectively. So CFSE will be also directly proportional to the series. कि 3D का है, 4D का है, या 5D का है. Now CFSE is also directly dependent on the number of ligands. यानी कि अगर आपके पास 4 ligands हैं, that means you are in the tetrahedral or tetrahedral case, or you are in octahedral case, then obviously the octahedral is going to have a larger amount of CFSE, that is crystal field splitting energy. Now in this, we'll first of all try and understand the ML6, that is metal which is having 6 ligands, and how to not calculate rather, but how to say whether a particular complex is whether a particular ligand is acting as strong field or it is acting as a weak field. And then we will have to say whether what will be the splitting and how the electrons will be distributed in the T2G and EG. So in ML6, you will have to look if it is the metal atom is from 3D series. If the metal atom is from 3D series, then you will then all ligands will act as strong field ligand because CFSE will be very high, not because of ligand, but because of the oxidation state, because we have seen that it is also proportional to oxidation state. Oxidation state ही इतनी high है that it is pulling, that it is attracting the ligand very effectively, and that is why the CFSE is very large. If the CFSE is, I will assume that ligand is what? The ligand is strong field. That means when we say the ligand is strong field, what we mean is that if you look at the T2G and EG level, then 1, 2, 3,
Now the electrons are not going to jump to the EG level, they will start pairing up. Okay, so when we say a strong field ligand, it means that the electrons are going to pair up. Now, that is for +4. If you are having metal in +3 oxidation state, then only the carbon and nitrogen donors are what they are strong field ligand, except in the case of CO3 positive. In the CO3 positive, oxygen also becomes what? Oxygen also becomes strong field ligand. When you have metal 2 positive, then the only carbon donors are what? Strong field ligand. Only carbon donors are strong field ligand. Now, when you are in the 5D, 4D, and 5D series, then all ligands are going to act as strong field ligand, and the strong field ligand will be only because of what the number of protons in the 4D and 5D are very high. In strong field ligand, pairing of electron takes place in the D. ठीक है डी में होता है एंड CFSC it is equal to what you have to also write this because CFSC will push they ask sometimes the CFSC value the del O value it is minus 0.4 into the number T2G when I write T2G T2G means the number of electron that is present in T2G plus 0.6 into the number of electron that is present in EG. For example, if you have something like this, let me if you have 1 2 2 3 and 4. Now here if you see you are having minus 0.4 into 3 plus 0.6 into 1. So 4 3 is a minus 0.12 plus 0.6. So this will be equal to minus 0.6 del. So this is how you have to calculate the CFSC. Right? Because this was your EG level, this was your T2G level. The number of electrons in T2G level is 3, I'm plugging in 3. Number of electrons in EG level is 1, I'm plugging in 1 in place of EG. Please write this down. Also, I have written this here because Shakti, Vikram, and Fekon equation, you have to remember this 3D series elements at least. ये आपको याद करना पड़ेगा कम से कम. Yeah, please raise your hand because there's a lot to write now. Please raise your hand once you're done writing. ठीक है ना? Please raise your hand once you're done writing. You will start writing from ML6 and you write till CFSC is equal to 0.4 into T2G plus 0.6 into EG del O. Please raise your hand once you're done writing. People are done.
मतलब यहाँ शायद हम याद रखें। ओके ठीक है, moving on to ML4. So in some generalization that you have to remember. First is if you go from D0 to D7, it will always be tetrahedral and it will always be sp3. Okay? And in case of D8 and D9, it can either be sp3 or dsp2. ठीक है, only in the case of D8 and D9. D10 will always be sp3. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, in D8 and D9, what you have to be, when it will be sp3, it will be sp3 only if the 3D series element is in +2 oxidation state and the ligand is before H2O. And I hope थोड़ा आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है, तो you know what is the meaning of this bracket. Yes or no, guys? Tell me. You know the meaning of this bracket? नहीं पता किसी को? फाजिल, आपको पता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? अच्छा, ये तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सुनो, नहीं, हाँ, कुछ नहीं। Sir, that bracket means equal to. नो, दैट इक्वल, जैसे ना हम Oh, आपको the बोले square ना, bracket. स्क्वायर ब्रैकेट इट डज नॉट मीन इक्वल, इट मींस इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं ना यार, चूज एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो एक आपके Yeah, इसमें like that सवाल आएगा only. ना। नहीं नहीं, आपकी आपकी इसमें एक सवाल आना चाहिए। इफ आई आस्क ना, चूज वन नंबर फ्रॉम 1 to 10, सर कैन आई चूज 1 and 10, और इट इज इंक्लूसिव 1 and 10 और इट इज एक्सक्लूसिव 1 and 10? आएगा ना कि 1 और 10 को भी चूज किया सकता है, और वी हैव टू चूज 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो फॉर दैट मैथ्स में होता है ना, आई थिंक रिलेशन फंक्शंस में आता है ये चीज ना। इफ इट इज लाइक दिस, जब Yes, sir. डोमेन आप लोग करते हैं तो डोमेन में होता नहीं है सब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, डोमेन Yes, निकालते sir. हैं फंक्शन का रेंज या कुछ तो ना, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान है हमको बस इस तरह। ठीक है, तो दिस इज इंक्लूडिंग when you have 3D series का मेटल, ठीक है, इट विल बी फ्रॉम आयोडीन, एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन वाई ना पीपल से दैट H2O से पहले सारे के सारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और H2O के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। बट दैट इज ओनली द केस फॉर ML4, है ना। इट चेंजेस इफ यू हैव 3D का एलिमेंट है, 4D का एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, DsP2 कब कब होगा? DsP2 विल बी इफ इट इज 3D and +2 एंड द लिगेंड इज आफ्टर H2O, यानी H2O के बाद का कोई लिगेंड है, देन इट विल बी व्हाट, DsP2 and square planar. That means the ligand will be acting as strong field ligand. And all of the ligand, if the element is in 3D series, oxidation state is +3 +4, 4D या 5D series का है, +2 है, +3 है, +4, कुछ भी oxidation state हो, it will be what? It will be D2sp. Only case in which it is sp3 is 3D +2 and before H2. ठीक है, please write this down. And then you will also write this two things, that the splitting of square planar is the maximum, followed by octahedral, followed by the tetrahedral. The tetrahedral and octahedral, they have a relationship that del T is equal to 4/9 del O. Please write this down. Raise your hand once you're done. Please raise your hand once you're done writing.
root. Anyone still writing? Please let me know. No one is writing. Chili. Write this. You'll have to calculate, first of all, कैसे करेंगे इस सवाल को देख. You'll have to calculate the oxidation state. ठीक है. Once you get the oxidation state, then you will write the electronic configuration. ठीक है. And then in electronic configuration, you will have something about D. D में कुछ होंगे. Then you will see whether the ligand is strong field ligand or weak field ligand. अगर strong field ligand होगा, then there will be pairing taking place. If it is weak field ligand, तो वहां पे pairing नहीं होगी. एक जितना pairing के बारे में बता देते हैं आपको. Pairing starts. Pairing happens like this. ना pairing जो है ना ऐसे होगा. For example, if you have 5 है ना. Now you have strong field ligand and वहां पे आपके पास 4 electrons है. तो 4 electrons में pairing ऐसे होता है. 1 2 3 T2G and then the pairing. ठीक है. अगर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 है and you are having only 2 electrons and it is strong field ligand, तो आप ऐसे पेयर नहीं करेंगे उसको. You will still write it like this because you have T2G and EG. You have to think in that term. ठीक है. तो T2G में पहले आप डालेंगे, कैसे डालेंगे? You will not pair it directly in the T2G. Pairing only happens for the fourth electron. Fourth electron से pairing start होगा. Try keeping. whether unpaired electron होगा उसी का magnetic moment होगा. ठीक है. Don't have to worry too much. Calculate करना पड़ेगा. Just need to write the order कि number of unpaired electrons ज्यादा हैं. Okay, Maria has answered. Actually, I'm giving you guys one more minute. 30 seconds more. Can you understand it? See here, guys. For the P case, Fe F6 3 negative, you have to at least calculate the oxidation state of Fe. Fe का क्या होगा? X plus -6 because of fluorine is going to have -1 oxidation state.
and there are 6 fluorine, that is minus 6, which is equal to minus 3. So I can write X will be equal to plus 3. When X is equal to plus 3, Fe, it has the atomic number 26. That means it will be having 4s2 and 3d6 as a ground state, and Fe3 positive will be having 4s0 because the electron will be removed from the outermost shell, which is the fourth shell, and 4s orbital, and 3d5. Since F is what? F is a weak ligand. Okay, F is a weak ligand. We can say that pairing will not take place, and you will have 5 unpaired electrons. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, you have 5 unpaired electrons. Now P will be maximum because more than 5 you cannot have any unpaired electron. That is why the spin magnetic moment of P will be maximum. So you are left with only 2 options. That is option number A or option number C. इसी में से कोई 2 ऑप्शन होगा. ठीक है. Does this make sense इतना? अब यहाँ पे आपके पास क्या है? Next you have vanadium H2O6 2 positive. So let us calculate for vanadium also. So vanadium will be X. H2O is what? It is 0. X plus 0, it is equal to plus 2. Vanadium is sub T and V, 23. Vanadium is 23. 23, that means it will be 4s2, 3d3. You remove 3 electrons, it will be 3d3. In 3d3, that means you will have 3 unpaired electrons because it took 1, 2, and 3. Why? Because pairing starts only after 4, and ACbH2 is a weak field again. Now, if you look at Fe2 positive, here also it is 2 positive. No? So 2 positive मतलब Fe2 positive. इसमें क्या होगा? 4s0 and 3d6. 3d6 का मतलब you will have one paired and 4 unpaired. ठीक है? 1, 2, 3, 4, and 5, and then 6. So here you have 5 unpaired electrons. Here you have 4. So P का है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा R, उसके बाद होगा Q. तो P maximum then R, P maximum then R, that is option number C. ठीक है, तो इस तरह से करना तो कोई हार्ड नहीं था, ये है ना, आसान था. बोर्ड लेवल का सवाल है, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है. लेकिन आप फिर भी सोचो बोर्ड में अगर ये 4 मार्क्स का आ जाए, 4 मार्क्स का है ना ये तो, ठीक है, तो उस लिहाज से भी आसानी सवाल है. 4 मार्क्स का अगर देखा जाए, कुछ नहीं करना था इसमें. यहाँ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्टेट निकाल के. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. ट्राई दिस. You have complex and then you have the CFSC. CFSC का फॉर्मूला है, CFSC का फॉर्मूला आपको लिखना होगा. ठीक है, प्लीज डू दिस. दिस विल टेक टाइम. वैसे किसका निकाल ले, कोई एक का निकाल ले तो चलेगा क्या? वन नहीं, बी का निकालने से नहीं, सी का नहीं, डी का नहीं. तो आप किसी एक का निकाल लीजिए, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे. 2 का निकालना पड़ेगा आपको मैक्सिमम. एक काम कीजिए, सी और डी का निकालिए. ठीक है, सी और डी का. सी और डी का इस वजह से बोल रहे हैं ना, बिकॉज सी एन आपको पता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड ही रहेगा. और फ्लोरीन के बारे में आपको पता है कि अगर 3D सीरीज का मेटल है, एलिमेंट है, 3D सीरीज का मेटल है, तो वो हमेशा ही वीक फील्ड लेकर रहेगा, है ना. तो आपको निकालने में आसानी हो जाएगी. नॉट हैव टू वरी. फॉर एग्जांपल कॉपर NH3 में आप गड़बड़ा सकते हैं, पानी में भी गड़बड़ा सकते हैं, है ना, कि पता नहीं ये होगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द एक्सट्रीम्स को ले लीजिए, CN और F का निकालिए, यू विल गेट द आंसर. ये तारीफ seems like it is correct.
guys, take 1 more minute, 1 या 2 more minutes ले लीजिए, लेकिन आंसर बताइएगा, इसका आना चाहिए आंसर। ओके, मार गया। ओके, 2 मिनट्स ऑल ओवर। देखिए गाइस, आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। एफिशिएंसी इसका पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe विल बी इक्वल टू x plus 6 into -1, that is equal to -3. So x is equal to 6 minus 3, that is equal to 3. So Fe3 positive will be having an oxidation state of 4s0 3d5. ठीक है। अच्छा, now this is what strong field ligand है। strong field ligand है, that means what will happen, pairing will happen। और pairing किस तरह से होगा, T2G में कितने, यहाँ 5 ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे। एंड Eg में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, Eg में रहेंगे 0। विल कैलकुलेट CFSC। CFSC इक्वल टू माइनस 0.4 into number of electrons in T2G plus 0.6 into the number of electrons in Eg। क्या करना है, -0.4 into 5 plus 0.6 into 0। 0.4 into 5 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -2.0। तो यहीं से आंसर आ गया ना आपका। सी का क्या होगा, 2। सी का 2 क्वेश्चन में किस किस में है, देखिए। सी का 2 है आपके पास, ओ ओनली ए ऑप्शन में, बस कीजिए। बस हो गया, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मान लीजिए ये कर भी लिया, सीएफएससी पढ़ भी लिया, ठीक है। आप मतलब जितना भी पढ़ लीजिए आप, आपने कुछ बोर्ड्स टाइप के सवाल कर लिए, ठीक है। लेकिन जब तक आप मेंस लेवल के सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, आपने इंडिविजुअली निकाल लिया सीयूए का, टीआई का, एफई का, एनएस निकल का, ठीक है। लेकिन देखिए टाइम का कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि इफ समवन इज गोइंग फॉर, देखिए फर्स्ट एग्जांपल ए का 1 है ना। तो जब आप अगर ए का सबसे पहले निकालते तो आपको ए का क्या मिलता है, 1 मिलता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, एक ऑप्शन बचता और फिर ऑप्शन नंबर डी बचता। फिर आपको टीआई का निकालना पड़ता, टीआई के लिए आपके पास क्या बचता, टीआई के बाद आपका आंसर आ जाता है ना, टीआई का निकलता -0.4। यहाँ पे B2 का दिया हुआ, ठीक है। सो दो निकालना पड़ता है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ओनली 1, और वहीं पे आंसर आ गया आपका, ठीक है। अप्रोच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच यहाँ पे आपको अपने हिसाब से करना है। यू नो सी इज गोइंग टू बी अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। H2NH3 के बारे में आपको नहीं पता, फ्लोरीन के बारे में आपको पता है दैट इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो जिसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली पता है उसी से आप स्टार्ट कीजिएगा। मूविंग ऑन, एक इसको करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
इसको देख लीजिए थोड़ा, इसमें थोड़ा आपको थ्योरी चाहिए होगा। देखिए, CFSC is what it is the difference in the energy of EG and T2G level. अब whenever you have any unpaired electrons and you give this light, आप इसको लाइट देंगे तो क्या होगा, ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट तभी होगा जब क्या होगा, when the light you are striking on this is what it corresponds to the energy difference between EG and T2G. तो when you are putting a white light, तो फिर white light में से वो component like visual component है, violet, indigo, blue, सारे components हैं, so it is going to absorb that component of the light which is corresponding to the energy difference। उसने उसको एब्जॉर्ब किया और ले गया। तो ये स्टार्टेड विद व्हाइट लाइट, बट व्हाइट लाइट से इसने ना ग्रीन येलो टाइप का कुछ रेंज था, उसने ले लिया। सो नाउ यू आर रिमेनिंग विद सर्टेन कलर्स विच आर नॉट व्हाइट। अब आपके पास एक कलर मिलेगा, ठीक है, एंड दैट कलर इज व्हाट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली। आपके पास यहाँ पे एक व्हाइट लाइट आया, इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, इट एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो ट्रांसमिशन हुआ लाइट का, दैट यू आर गोइंग टू सी एंड दैट विल बी अपीयरिंग एज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो the energy or the energy of light or the frequency of light or the wavelength of light, if I talk about these things, then it all depends on the CFSC. So the energy of light, it directly proportional to CFSC. जितना ज्यादा CFSC होगा, higher the CFSC, higher will be the energy of light that is absorbed by the complex. It will also be, I can say that the frequency will also be proportional to CFSC because energy and frequency are what, directly proportional. And if I talk about the lambda, then the wavelength will be what, inversely proportional to CFSC. ठीक है, तो because CFS energy and lambda are what, inversely proportional, that is why the wavelength will be higher if CFSC is low, and if the CFSC is high, the wavelength will be higher. And we know that CFSC depends on what, the strong field and weak field ligand. So I can say that lambda, the wavelength, वीक फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें, वीक फील्ड लिगेंड की क्या होता है, एनर्जी होती है हाई, वेवलेंथ होता है हाई, एंड फ्रीक्वेंसी होता है हाई एंड द वेवलेंथ इज लो। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन दैट केस द एनर्जी इज, मैं उल्टा बोल दिया, माय बैड गाइस, इफ यू हैव वीक फील्ड लिगेंड, energy will be low, frequency will be low, and the wavelength will be high. Strong field ligand में energy will be high, frequency will be high, and the wavelength will be low। ठीक है, इस तरह से होगा। Now assertion says, अब assertion और reason को देखिए और फिर बताइए, है ना, completely based on this। और बाकी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होना चाहिए, then you can answer it। चलिए आपको एक और मिनट देते हैं, then we will discuss this question।
The same one, CO cell NH3 whole 5 2 positive absorbs lower wavelength of light with respect to CO NH3 whole 5 H2O 3 positive. Now, if you look at this complex, then you have to first of all calculate the oxidation state. इसका calculate करिए तो बेहतर होगा आपके पास. So cobalt X minus 1 is equal to 2. ठीक है, because NH3 is 0. So I can say X will be equal to plus 3. In this case also, X will be equal to 3 because NH3 is also 0 and H2 is also 0 oxidation. So the oxidation state matters particular case. ठीक है. अब देखते हैं कि regarding the ligands. Now NH3 whole 5 is same in both the case, so I will ignore the NH3 whole 5. Whatever energy, whatever CFSE we are getting will not be because of NH3. I mean, whatever difference of energy we are getting will not be because of NH3 whole 5, it will be because of Cl and H2. Which is strong field ligand. If I compare Cl and H2, then we know that Cl is weak field ligand and H2 is strong field ligand. ठीक है. तो आपके पास H2O क्या है? Strong field ligand है. That means H2O1 will be having the higher energy and it will be higher frequency and lower wavelength. ठीक है. Now it is saying Cl wala absorbs at lower wavelength with respect to नहीं. This is false. And according to us, strong ligand कौन सा H2O है. If I compare Cl and water में तो strong कौन है? Water. It will have higher energy, higher frequency and lower wavelength. है ना? So it will absorb light of higher frequency, higher energy and lower wavelength. So this is false. So option A will be correct. A is false, but R is true. You don't even have to read the R. Does this make sense? Yes, no, please tell me, guys. हासिल नहीं बताइए. फादिल, मारिया, मदीहा, तारीफ, शाहिद, नियाज. जल्दी बताएं. एक एक करके बताएं. फादिल. जी यार ने बता दिया. Yes, फादिल, tell me. Make sense? Till here? नहीं. फादिल चैट में माइक ऑन कर लो भाई. थोड़ा सा हमको अच्छा भी तो लगता है तुम्हारी आवाज सुने. आप ही ऊपर सुनिए. हमको भी तो थोड़ा मन है. फादिल हाँ या ना. क्या हो गया? माइक खराब. मारिया, मारिया इज वेरी गुड स्टूडेंट. मारिया माइक ऑन कर. जी मारिया, समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है. मदीहा, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. ओके. तारीफ. Yes, sir. ठीक है. सो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. 2 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना. ठीक है. एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. ये वही उसी